तो नाउ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गेटिंग स्पेसिफिक टू द लिसनिंग एग्जाम। हमने खत्म कर लिया अबाउट व्हाट इज पीटीई। हमने उसमें डिस्कस कर लिया कि पीटीई में टोटल 360 नंबर है, 360 मार्क्स आर देयर इन पीटीई एग्जाम एंड देयर आर टोटल 20 क्वेश्चंस। ओके, सो देन वी डिस्कस दैट उसमें राइटिंग में, रीडिंग में, लिसनिंग में, स्पीकिंग में कितने क्वेश्चंस है, हर क्वेश्चन अपने सेक्शन को कितने नंबर दे रहा है, और देन वी डिस्कस दैट हर एक सेक्शन दूसरे सेक्शन में क्या कंट्रीब्यूशन दे रहा है। हर एक स्पेसिफिक एग्जाम के अंदर अगर डेफिसिट है, फॉर एग्जांपल राइटिंग के अपने 2% 30 मार्क्स देते हैं, हम 60 का डेफिसिट कैसे पूरा होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इंडिविजुअल सेक्शन एंड इंडिविजुअल एग्जाम्स ऑफ पीटीई। द फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज द लिसनिंग एग्जाम। In this specific listening exam, there are total 5 questions जो कि listening के अपने हैं. The first question is summarize the spoken text, and number 2 is multiple choice question with a multiple answer. Number 3 is a fill in the blanks. Number 4, highlight the correct summary. Number 5 is the multiple choice question with a single answer, and then select the missing text. And then number 7 is highlight the incorrect word, and number 8 is your right from dictation. These are the 8 questions total of your listening exam. ये total 8 questions जो listening exam के हैं, ये listening को total, ये listening के exam को total about 55 marks दे रहे हैं, 55 or 56 marks. So if you are having a grip upon all 8 questions, you can even not win more than 56 marks. आपकी सारे क्वेश्चन में कोई गलती भी ना हो so you cannot win more than 56 marks or 55 marks out of 90 here in the bottom. So where the rest of the marks will come from? The rest 36 marks come from the speaking section. और स्पीकिंग के कौन कौन से क्वेश्चन होंगे जो आपको लिस्टिंग में अपने मार्क्स को उठाने के लिए चाहिए? नंबर 1, it is repeat the sentence. It is repeat sentence. Repeat sentence is the first question of the speaking exam that is required to be under the grip if you want your marks in the listening exam. जो दूसरा सवाल आपको चाहिए है इसके लिए, that is retell the lecture. Retell lecture, and this retell lecture will give you the numbers. तीसरा question है answer the short questions. Answer the short questions. Answer the short questions. So now if you ask Zishan, sir, how many questions are there in listening? Yes, there are 8 questions. But if you want to take 90, there are not 8. There are how many? There are 11 questions. Clear? 8 listening ke apne, and then repeat sentence, retell the lecture, and answer the short question. And these belong to your speaking section. If we talk about the summarize the spoken text, it contributes how many? It contribute mark. Contribution marks are, I'm going to make a asterisk or put a asterisk on it ताकि आपको ये याद रहे. So here it is 13 marks are being contributed by summarize the spoken text, and then only 2 marks are being contributed by multiple choice questions. Double answer, fill in the blanks are going to contribute 6.5 marks. Highlight the correct summary is going to contribute just 1.3 numbers, and then multiple choice question with a single answer, just 1 number. Select the missing word, just 1 number. Highlight the incorrect words, 8 number, and write from dictation is going to contribute 20 numbers to your listening exam. अपने 8 सवाल 55 मार्क्स दे रहे हैं. अब अगर आप ये कहें कि किन किन क्वेश्चंस को कर लेना चाहिए if I want to pull up the numbers of listening in a short interval, तो याद रखिएगा, summarize the spoken text. Number 2 is fill in the blanks. Number 3, highlight the incorrect word, and चौथा सवाल है write from dictation. If you are in grip of only 4 questions of the listening, and along with that 3 questions of your speaking exam, you can really marvelously demonstrate your listening exam over 80 marks. बड़े आराम से आप 80 plus में चले जाएंगे listening के exam में. How many questions? 3 of speaking, and then how many? Only 4 questions of listening itself. Listening के 4 questions out of 8 will be giving you about 50 numbers, and then the 3 questions of speaking exam that I've told you already, that is with retell the lecture and repeat the sentence. These will be giving you the maximum marks. तो अगर 4 और 2 6 हो गए, स्पीकिंग के 3 में से 2 कर लें और यहाँ पे 4 कर लें 8 में से, तो टोटल आपके 6 questions, 4 of listening and 2 of speaking. 4 listening and 2 of speaking will give you about 85 marks out of 90 of your listening exam. So if you want to really pull up the numbers of the listening exam, 4 questions should be your curiosity for the listening itself. 8 में से 4, and 3 questions जो speaking के हैं उनमें से 2, retell the lecture and RS would be very important. So if we talk about 4 of listening and 2 of speaking, you can really work outstandingly at the 85 out of 90 in your listening exam. So we proceed further for the next exam, and that exam is the reading exam.